Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Preeti Yadav. I'm currently studying in Mumbai, pursuing MBA. And prior to this, I was a civil engineer. I did my BTech in civil engineering and then worked for 2 years in civil engineering field itself. In this video, I will be sharing my Amco Coach interview experience. So let's get started. My interview was on 17th or 18th of Feb. I don't remember the date. In Delhi itself, in some five-star hotel. So first of all, we went there and we document verification was done, and after that we were made to sit in particular roll number, not roll number, like application number or something was there. We were made to sit according to that, and उसके बाद हमें we were briefed about how the VAT will happen, and then sheets were provided, and we were instructed that we would be given 2-3 minutes to think about it, and then a timer will start. And exactly I think 10 or 15 minutes were given after that to write our thoughts about the topic. So the topic given to me was what do you think about the agri-tech revolution in the country since independence. So that was the topic given. After the timer is up, so the sheets were taken and then we were divided into panels, and we were sent to our respective waiting areas. So I think fifth or sixth somewhere in my panel. So I went in and greeted them. There were two professors. One was very experienced, very aged, I think in his 50s, and the other one was somewhere around 40s. So first of all, they asked me for my file. We were required to take our documents with ourselves. They took my file and they saw my mark sheets and everything, and then they said, "Oh, you are an engineer." I said, "Yes, sir, a civil engineer." Okay, so one of them started asking why civil engineering. To which I replied कि मुझे हमेशा से लगता था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो दैट शुड बी इम्प्रूव्ड, इसलिए मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी थी, ऐसा कुछ मैंने आंसर दिया. सो दे वर लाइक, ओ गुड रोड्स, यू वांटेड टू मेक गुड रोड्स. जिस होटल में मेरा इंटरव्यू था उसके अराउंड भी, इट वॉज अ 5-स्टार होटल, बट उसके अराउंड भी जो रोड्स थे वो अच्छे नहीं थे, बहुत सारे पॉट होल्स थे, बहुत गंदी कंडीशन थी. सो दे सेड कि ये 5-स्टार होटल है तो इसके अराउंड तो अच्छे होने चाहिए थे, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न कि ये अच्छे नहीं है. सो आई वॉज लाइक, मैंने काफ़ी लंबा आंसर दिया था, बट इन शॉर्ट वॉट आई मेंट वॉज कि देर इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन दी ऑफिसर्स और द people who are building the roads, the contractor or the government officials, whoever जो भी involved होते हैं, उन सब के साइड से there is a lack of accountability, lack of awareness, and 2-3 things there were जो मैंने बताई थी. तो उन्होंने कहा कि okay, that is fine, that's something makes sense कि accountability की तो बहुत कमी है हमारी कंट्री में. एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनके दे सेड कि रिसेंटली आवर स्टूडेंट्स वेंट टू जापान फॉर इमर्जन प्रोग्राम, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा था, बट इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे तो इतना अच्छा नहीं है. व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न. सो आई सेड सिंस इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और उस हद तक की ना ही अवेयरनेस है ना ही इनिशिएटिव्स हैं, सो इट इज़ अ लॉन्ग रोड. तो ऐसा करके कुछ मैंने आंसर दिया था. आई डोंट रिमेंबर माई आंसर एग्जैक्टली. सो it is not an easy road for us to reach that infrastructure in such a shorter span, and it will take us time to be there. तो ऐसा कुछ मैंने आंसर दिया था. तो उन्होंने कहा था कि और क्या करना चाहिए, लाइक दिस इज़ द रीज़न, ये तो ठीक है, लेकिन इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए. सो आई मेंशन फ्यू की वर्ड्स लाइक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाई आई सेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह भी करना चाहिए. सो ही वाज लाइक, ओ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सो आई स्टडीड इट इंजीनियरिंग इन माई इंजीनियरिंग डिग्री. सो आई सेड फ्यू ऑफ द थिंग्स. देन उसी में से उन्होंने एक चीज़ निकाली एंड ही सेड कि व्हाट इज़ द रीज़न कि इंडिया का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है. टू विच आई रिप्लाइड कि जैसे कि हूपर्स जो होते हैं वो अभी आ रहे हैं अपने घर पे डेली जो है वेस्ट पिकअप करने के लिए, बट स्टिल वी आर रिक्वायर्ड टू सेग्रीगेट द वेस्ट, बट वी डू नॉट डू दैट. So I think basic awareness of segregating and how things work and why we should do it, because people think कि हमें क्या है, हम तो फेंक देते हैं, आगे कर लेंगे जिनको भी solid waste management करना होगा, हमें कोई मतलब नहीं है. So I think that is one of the main reason. Basic segregation can be done at doorsteps, so people should made aware about it and why they should take this action, so they should be motivated about it.
So they said, और क्या there are various levels of like if you are saying कि segregation घर पे कर लेते हैं, but suppose for example plastic होता है, there are various grades of plastic, तो उनको कैसे segregate करेंगे? What do you हम tax भी दे रहे हैं और हम फिर इतना काम भी करें? That is what he said to me. So I said definitely we can't do that because that requires certain equipments to identify which grade of plastic it is. And also it requires knowledge and patience of all of the process. It is not an easy process. So I said definitely that is not what I'm asking people to do. I just suggested that people should do basic biodegradable, non-biodegradable or medical waste or all those kind of sortation at home, nothing else. Other things would be done in process by the institute or the agency which is in charge of all of this. So after that they said I don't know how so in between they said taxes की बात हुई थी, so they said कि the GDP of our country is growing but the per capita income is not growing. What do you think? What are your opinions on that? So I said like GDP is growing but per capita income is not growing. So I think we need to work on that. और अगर ये नहीं करते हैं so जो भी अपना goal है GDP को लेके that won't be reached of a developing country, मतलब जो developing country हम बनना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा because the per capita income इंक्रीज़ नहीं हो रही है उतनी. इफ़ वी टॉक अबाउट GDP ग्रोइंग, हमारा कंट्री काफ़ी ऊपर है, टॉप 5 टॉप 6 उस टाइम पे जो भी था वो मैंने बोला था. But if we talk about the per capita income, our country is not even in the top 50. So we need to work on that because that is the ultimate, that is the root of a developing country. अगर वही improve नहीं होगा तो हम आगे improve नहीं कर पाएंगे. Something of this I said. So then the second professor was checking my form जो fill करते हैं SOP और strength and weakness. So मैंने अपनी strength और weakness में लिखा था adaptability and communication. And I had WorkX. So he asked me, you have written adaptability and communication. We can see your communication is good. What do you if you were working and suppose you have a teammate and you have some different opinions and the teammate is suggesting something else. So what will you do? To which I replied that I always respect others' opinion. I have certain opinions. I respect your opinion, but I expect the same from you. So I would suggest them that we can talk it out and find some common ground and then proceed further in the project or whatever we are doing. So he was very impressed by my answer. So he said that is a good thing that you respect others' opinion, but what if the other person is not doing the same? So what will you do then? So to which I said like, and then I have to be patient with them. Like maybe every one of us has different backgrounds, different upbringings. So definitely सबके opinions बहुत अलग-अलग होते हैं. So I know that thing and I know how our opinions are formed because the upbringing is different and the environment we were brought up was different. So I would be patient enough to listen to them and see what they are saying and what is the perspective from which perspective they are saying that और वो क्यों बोल रहे हैं. And maybe their perspective or their suggestion is more beneficial for the project rather than mine. So to do all of this I have to be a good listener और मुझे अच्छे से उनकी बात सुननी पड़ेगी. So he said कि that is a good point, but what if उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो. So then to which I smiled and replied, then I would definitely reach out to my manager or senior and ask them to look into the matter and decide what step we should take ahead and how we should proceed in the project. So वो हो गया था. And then what else I was asked. So he saw my mark sheets also. So in engineering, except for 2 semesters, I had my percentages in 80s or something. But in my first sem, I didn't study at all. So because of that, my aggregate dropped to 79%. So he said to me, I can see you have improved gradually in your semesters, but if you come to IMK, there would be a lot of pressure. I would be teaching quants and other professors would be teaching something, but as we can see, your marks are not up to the grade. He said that to me on my face, and but I didn't it didn't disturb me at all. So your marks are not up to the grade. How will you cope up? Will you be able to understand the concepts I'm teaching? I do not want my students what I'm teaching with so much of efforts to bounce from their head or something like that. How will you cope up with that? To which I replied that I have always been a hard worker. I have always believed in hard work. So
I can't remember what I exactly replied, but something that I replied was, yeah, I said, as you can see, ki I have consistently improved. I have consistently improved my marks in my graduation, and then I have worked for 2 years. So definitely, I have some kind of vision in my mind, and I know that my marks are not up to the grade. But I believe in consistency and persistence. So I would definitely put in my hard work, and I believe I would be able to do that. So to which he said, that is good, you're putting your hard work, but there would be so many assignments, so much of pressure, बहुत chaotic होता है और बहुत ही hectic होता है. How will you be able to do that with such marks? So I again said that consciously or unconsciously, I'm preparing myself for that. Not just me, other CAT aspirants are also preparing themselves for the same pressure, to live under the pressure and to perform under the pressure. So I think consciously or unconsciously, I'm doing that, and I have given the exam, I have cracked the exam, I'm giving the interviews, and then I will be joining an IIM. So I think I'm somewhere prepared for that pressure, and whatever comes in life, I believe that understanding the situation and then not reacting to it and responding to it is what I believe in. और ऐसा करके मैंने कुछ अच्छा सा आंसर दिया था, and all these answers came because एट दैट टाइम आई हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. तो मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती थी, एंड आई थिंक दैट इज़ द की रीज़न कि मेरा कोഴിക്കോട് का इंटरव्यू अच्छा गया था. बिकॉज एज सच उन्होंने कोई टेक्निकल क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं था, वेरी जेनरिक क्वेश्चन, आसपास से जो भी कॉन्वर्जेशन अपने आप मेरे आंसर्स में से जो भी पॉइंट्स आते जा रहे थे वो उसी से क्वेश्चन पूछते जा रहे थे. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन फॉर एनी इंटरव्यू. आप क्या आंसर्स दे रहे हो, वही आंसर्स से फॉलो अप क्वेश्चन होंगे. और ये बहुत सारे वीडियोज़ में आपने पहले भी सुना होगा, बट दैट इज़ ट्रू. बिकॉज मेरे और भी जो भी इंटरव्यूज़ हुए थे उन सब में भी यही हो रहा था कि मैं जो आंसर दे रही हूँ उसी में से वो फॉलो अप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अदरवाइज वॉट एवर आई हैव रिटन एज माई स्ट्रेंथ वीकनेस, SOP में जो भी लिखा है या फिर मेरे मार्कशीट्स में जो भी मार्क्स वगैरह हैं उससे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. देयर इज़ नथिंग आउट ऑफ सिलेबस एज ऑफ. बिकॉज इससे एंड आई बिलीव इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट तो इतना तो सब में वो लेवल आ ही जाता है कि यू नो यू आर एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस जो कि पर्टिकुलरली फ्रेम नहीं होंगे, जो कि कभी आपको किसी ने बताया नहीं होंगे कि दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड टू यू. सो बी प्रिपेयर्ड एंड हैव सम कीवर्ड्स इन योर माइंड्स एंड यूज देम इन योर आंसर. दैट इज़ one thing I would suggest. And after that they came in my introduction I mentioned that up to 8-9 standard we were living in Gujarat, and then we shifted to Rajasthan. So they said you are Rajasthani, so what is the language used there? So do you know Rajasthani? So I corrected them that Rajasthani is not any language, like either it's Marwadi or Mewati or different languages of my area. So they said give us your introduction in your language. So which I don't know how I was not able to answer. एक तो इतने देर से वो कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू हिंदी बहुत डिफिकल्ट हो गया था. पता नहीं कैसे, मैं हमेशा हिंदी बोलती हूँ बट आई डोंट नो उस टाइम पे क्या हुआ. बट समहाउ मैं एक लाइन भी नहीं बोल पा रही थी कि मेरा नाम प्रीति यादव है. ये भी मुझसे नहीं बोला जा रहा था, मैं बहुत फंबल कर रही थी. सो दे वर लाइक रिलैक्स, टेक योर टाइम एंड देन स्पीक. तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए मैं चुप हो गई, एंड देन आई फ्रेम्ड लाइक मेरा नाम प्रीति है इन माई माइंड, एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग. तो इन बिटवीन ही सेड ये तो हिंदी है, दिस इतना तो हमें भी पता है, ऑल्दो हम कोഴിക്കോട് में पढ़ा रहे हैं, बट इतना हमें दिस इज़ हिंदी यू आर टॉकिंग इन. सो दे सेड कि नहीं ऐसे नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में बताओ. सो आई अगेन थोड़ी मेरी जो गाँव की लैंग्वेज है उसमें थोड़ा बहुत बोलने का मैंने ट्राई किया, बट मैं नहीं कर पाई. तो सो आई सेड आई एम सो सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू, आई हैव नेवर लिव्ड देयर, सो मुझे नहीं आता है वो लैंग्वेज. बट एट द टाइम मेरे माइंड में ये नहीं आता कि ये नहीं आया कि मुझे गुजराती आती है तो मैं गुजराती में आंसर कर दूँ. बट आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी. But then they were like, "Arey, it's fine." So they offered me a candy, and then they were like, "Thank you, we'll see you soon." So that is how my interview went. And कोई भी interview से पहले you would be nervous, but there is no such thing to get worried about, because they will say harsh things to you, but you should be prepared कि हाँ, if I have low grades in my mark sheet तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा, कि क्या रीज़न है मेरे मार्कशीट में इतने कम मार्क्स, मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने कम हैं. वो क्वेश्चन करेंगे आपको कि जब आपके कैट्स ऐसे रहे हैं तो हाउ वुड यू परफॉर्म वेल इन एन IIM.
बिकॉज यहाँ पे काफ़ी प्रेशर, पीयर प्रेशर भी बहुत हो जाता है, एकेडमिक प्रेशर भी बहुत हो जाता है, एंड अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो हैपनिंग, सो इट इज़ हेक्टिक. तो हाउ विल यू मैनेज? सो वर्क ऑन योर HR questions as well, and be updated about what is all happening around. And जैसे कि infrastructure was something related to civil engineering, तो मेरा कॉन्वर्जेशन पूरा उसके अराउंड था. सो वट एवर बैकग्राउंड यू आर ऑफ, सो बी प्रिपेयर्ड ऑफ टॉपिक्स revolving around it. And other than that, you have to be confident in your body language. कोई भी इंटरव्यू था, आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी लैंग्वेज, और मैं हमेशा स्माइल करके अच्छे से, लाइक आई ऑलवेज गेव माई इंटरव्यूज़ जैसे कि नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रही है. वो मुझे कह रहे हैं कि लाइक द क्वेश्चन की दो टीम वर्क के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या करोगे, मैंने एक आंसर किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तब भी वो नहीं मान रहा. तो आई यूज़ टू टेक अ पॉज एंड स्माइल कि अच्छा तब भी नहीं मान रहा, तो फिर मैं ये करूँगी. सो यू नो, बिल्ड दैट ऑरा ऑफ कॉन्वर्जेशन, लाइक you are just there and confident in yourself and talking. So I think that is all about this video, and thank you for watching this video. And if you like it, please do engage with this channel, and also follow me. You can also follow me on Instagram. You will find it in the description box. So thank you, and if you want to me to make more videos about other IIM interviews, then let me know in the comment section. Thank you, and good luck for your interviews.